Yeah. Good morning, everyone. Uh, s- Before starting session, happy Raksha Bandhan to everyone. And Raksha Bandhan is a one festival that they start Indian festival. That you can say कि after Holi, ये छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं. But once the Raksha Bandhan is started, after that there is the one national holiday, that is the 15th August, then Janmashtami, then New Year, and it is the going on. So why I'm talking about festival? Festival is the one thing where we Indian enjoy, we celebrate, we enjoy food, we enjoy relationship, we exchange some items, some gift to each other, whether within the relative, within the friend, or within the corporate culture. In all over India, during Deepavali, we are exchanging gift. It can be like uh, it eatable item. It can be some goods. It can be some books. It can be any showpiece item. But it must be some gift during the Deepavali and any other festival. Just today is the Raksha Bandhan, and everyone is aware कि when any sister is tying knot on in the hand of the brother, the brother is giving something. It can be chocolate, it can be some um, toy, it can be some diary, it can be any kind of goods, it can be 500, 200, 1000, 5000. That will depend. That will depend ki where you are doing and what kind of the financial position you have. So I'm not talking about the financial position, just I'm talking about ki when you are receiving some money, when you are receiving some item, some you are receiving, suppose that I'm paying my sister one gold ring. Let's say the amount is 20,000, 30,000, 40,000. So whether this amount will be taxable in my hand or not. Suppose that my father today he is thinking कि money is you don't have the sister, but I want to give the some gift to you. Just he's paying the 50,000 rupees as a check to me. Okay. Because I have expressed one thing, कि Papa, I want to buy car, I want to buy home. So father has to give the some down payment, or he's thinking कि चलो he has to give something. So what he has made plan कि चलो आज रक्षाबंधन है, तो why not I give the check of the 50,000 to Manish. So he's paying the 50,000 to me. Okay. Then this is not a income. Reason is that I cannot provide any service. I am not providing any job to my father, but my father is giving. The money is traveling from one hand to another hand. Reason in income tax, my father is a separate legal entity. I am the separate legal entity. Whatever I have income, I have to file return and I have to show in income tax. Uh, that is the same situation with my father, because my father is the retired officer and he has pension income. So once the pension income is exceeding in new tax regime 7 lakh rupees, then it is a taxable. So some money is coming from my father account to my account. So definitely I have to understand, I have to know the rule of income tax, whether I have to pay tax on money coming from my father or not. Suppose that this is the same situation where I have to buy home and I'm taking 50,000 from my father. There is the one case. Another case. Uh, my father has a very good friend and he requested to his friend कि Mr. Pankaj, please give me 1 lakh rupees to my son and this will be returned after 6 months, 1 year. And my friend of my father, he has given the 1 lakh rupees. So I received 50,000 my father, 1 lakh rupees from friend's father. So whether I have to pay tax on the 1,50,000, whether I have to pay tax on the 50,000, whether I have not to pay on 1,50,000. So that is the scenario. That is the reason that today is the Raksha Bandhan and today is the festival season. So I have taken gift income in your income tax return, because everyone is receiving gift, everyone is giving gift. And this is the very common situation. So whatever you have question related to gift income, whether you are receiving from your sibling, whether you are giving to your sibling, whether you are receiving some amount from kids, you are giving amount to kids, you are receiving some
amount from parent, you are giving some amount to parent and other than relative. Suppose that my friend had asked me, Manish, can you give me the 10,000 rupees and that I will not return to you. So what will be the income tax situation? And suppose that I have given 2 lakh rupees to my friend with condition, within the 6 months you have to return. So what is the tax treatment, whether I have to pay or my friend has to pay income tax on 2 lakh rupees or not? So that kind of we have the various kind of situation. We have the various kind of the circumstances in our daily life, in real life. So what we have to treat in income tax. So if you have any question, so definitely we will take at end of the session. And you think, this question is the most important, just you have to unmute and you can ask. So festival is the one thing that we Indian enjoy every time. In festival, we are meeting each other. We are going friends home. We are going family home, and we are greeting each other. Okay, and we are expressing own happiness, on emotion, etc. That, and during the festival, definitely it is the food, because without food no one can live. So in during the festival we have the some a special kind of the food whatever we are eating in the day-to-day life. So during the festival we are enjoying some a special kind of food, and that is the delicious and you can say the extraordinary food that we generally don't use in the day-to-day life. Okay, and again we are traveling, we are enjoying, and we are exchanging lots of gifts. So that's I'm saying ki if it is a gift like chocolate, suppose that today the Raksha Bandhan and some any brother is giving a packet of chocolate to sister. So whether it is a taxable or not, whether it is a taxable, not taxable, so what is the tax treatment? Because in the exchange, we are thinking ki in the gift, so it is the thousand of crore in the whole uh, festival season the amount is the exchanging. So what is the tax treatment? So that, and you are paying the gift as a chocolate, you are paying in the gift wrap and etc. All those things, any kind of the gift. So what you have to treat. So that is the most important. So if you have any question till now, whether topic is the relevant, whether you have faced the such kind of the problem. So if you have any question, you can unmute and you can ask. Otherwise, we will discuss later. Gift. Gift can be in goods like chocolate, like diary, like yeah. Ma'am, if you have any question, please you can ask. Sir, thank you. I think you're touching upon a very, very important topic. Sometimes we do money exchange on sentimentality, some for religious festivals and stuff like that, or even weddings, birthdays, etc. And I want to understand, twice I have helped friends with large sum of money, but with the understanding that when they are able, they will return. So how does that get treated on that year when I have given that money? And how will it be treated? Because sometimes they are like 1 lakh I paid to a friend who is suffering from cancer, and she is now returning sometimes 2,000, sometimes 5,000, like that. How will I treat both these monies? Yeah, or sometimes what's happened, ma'am, they are not returning money. There is the also possibility, and there Also, is yes, yes, also, definitely. also. And there is a some 1%, it is a very rare person. Suppose that I have helped my friend with the 1 lakh rupees. So if Hmm. friend is very good, so sometimes he is paying ki, chal bhai, chalo, I am not pay, I will pay 1 lakh 5,000 rupees. 5,000 Hmm. rupees additional. That is a very rare case. That is not Huh. possible because principal amount तो कोई देता ही नहीं है, तो who is going to pay the interest? But if anyone is paying the more than principal amount, so what Hmm. will be the treatment? So that we will take care each and everything. The, ठीक है at sir, the end thank you. of the session, if I am not able to explain my your question, so definitely you can ask again. Otherwise, I am 100% sure that the way I am giving the session to you or my presentation, you will be the 100% satisfied. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So gift is coming like goods. Goods के case में we can give the chocolate, we can give the diary, we can give the any showpiece item or anything. Okay, it can be negligible amount like 50 rupees, 100 rupees, 200, 5,000, 1,000, 10,000. It can be
not negligible, like 10,000, 1 lakh, 2 lakh rupees. Suppose that I have to give the gold ring to my sister, then amount will come 30,000, 40,000. Suppose that I have to give the some necklace in the during the wedding, as the madam has asked the question. Okay, suppose that there is some wedding is happening in nearby. Okay, or one of the my friend, they were looking some kids. They have the marriage for the 10 years to 12 years, but they don't have the kids. But after 10 to 12 years, 13 years, they have the kids. Okay, so there is some celebration in their house. So it is a very good moment. So just I'm also emotionally involved with my friend. So that I'm sharing, I'm giving the some valuable amount like 30,000, 50,000, 1 lakh rupees, anything. Okay, then what I have to make the treatment or etc. So you have to understand, gift can be in term of the goods or in term of the money. So like I can UPI or etc. all those things. So for the both treatment, we will take decision ki how it is going on. So money is small. Suppose that today the Raksha Bandhan, and suppose that there is the one girl and she is tying knot in hand of the brother, like 5 brothers, 6 brothers, 10 brothers. Okay, and everyone is paying like anyone is paying 100 rupees, anyone is paying the 200, anyone has paid the 1,000 rupees, and it is amount like uh, total amount is the 5,000, 10,000, 2,000. Then we have not to worry. And again, if this money is coming by cash, because everyone is putting the 100 rupees, 500 rupees note. Okay. When it is coming in cash, then you can avoid for the income tax. Just I'm giving the practical example, but income tax is not saying that when it is the cash money, then you have to avoid. Reason is that cash we cannot record. Government will not understand. Government will not able to capture the cash transaction. That's why we can ignore. But if we want to disclose, so we have to disclose. Just I'm giving the one more example with you. Suppose that I'm residing in rental house. I'm residing in the rental house and my rental expense is the 20,000 per month. जहां पर मैं रहता हूं, this घर rental is the 20,000 rupees. If I'm paying 20,000 rupees to my landlord through check, through UPI, sorry, through check, through UPI, then this amount is coming reflecting in bank. So my landlord has to disclose in their income as the rental income. There is no, I'm 100% sure that you got my point. But I am paying this rent in cash. That is the illegal, because in income tax is saying that any amount, if you are paying more than 10,000 rupees to any person, then it is the illegal and it can be punishable to you. But in the real life, it's happened. Suppose that I am paying 20,000 rupees to my landlord in cash, and landlord is thinking, I don't want to disclose, I don't want to give income tax to income tax department. But though government of India or income tax, they are not able to understand, because income tax will say, ki, yeah, Mr. X has the house. He will disclose as a house, and he can disclose that this house is used for the self-occupied, not as a rental. He is disclosing कि ये घर मेरा है और I am residing. तो what will happen? वो मेरा जो पैसा है, whatever money I am giving in cash, he will not disclose in income tax return. तो government of India को या income tax department will not aware कि this amount ये इसका rental income है. हाँ, if I have make the complaint in income tax department against my landlord कि sir, I am paying 20,000 rupees in cash to Mr. XXX, and I have this rent agreement, and if he's not disclosing rental income in his ITR, then it is the punishable. So that's the different scenario. So what I want to say, if transaction through bank, whether it is the UPI, check or anything, then other person has to disclose. As the ma'am has asked question कि इन्होंने एक फ्रेंड को she help one friend with the 1 lakh rupees, and he is returning like sometime 5,000, sometime 10,000, sometime 20,000, and he is
paying in the small amount. So first we have to think कि whatever 1 lakh rupees I have given to my friend, whether it is a taxable for me? No, because I am giving. So there is the one thing कि when I am giving, money is coming from my side, so there is no tax liability. Because once the money will come, then it will come as the tax liability. Now, question is that कि my friend is receiving 1 lakh rupees through bank, तो क्या उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी होगी कि नहीं, ये हमें देखना है. एंड आफ्टर सम टाइम माय फ्रेंड इज रिटर्निंग टू मी 5,000, 2,000, 20,000, 50,000, whether it is a taxable to me. So then it is the case of the loan. In the case of the loan, we have to understand, suppose that I have paid the 1 lakh rupees to Mr. X. I have paid 1 lakh rupees to Mr. X during his illness or during his daughter wedding or etc. anything. किसी भी occasion पर I have transferred 1 lakh rupees to Mr. X with intention कि भाई this is the loan amount and I am helping to you. तो what will happen कि ये 1 लाख रुपया I am paying, मेरे अकाउंट से जा रहा है, तो there is no income tax question on me. There is no income tax question on me. And Mr. X is receiving. Then income tax department can ask, Mr. X, you have received 1 lakh rupees, do you have to pay tax? Then Mr. X will say, sir, this is the loan amount I have received from Mr. Manish, and with intention I have to return in the 1 month, 1 year, 2 years, 5 years. Tenure can be anything, but it cannot be infinity. आज से 50 साल बाद दूंगा. नो, इट कैन बी अराउंड 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 5 ईयर. इट कैन दैट पॉसिबल टेन्योर. ये नहीं कि आज 1 लाख लिया और मरने के बाद मैं दूंगा या दे दूंगा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट टेन्योर शुड बी फिक्स. So let's assume there is the one communication between me and my friend कि within the 1 year I will return. Then it is the returning position कि I am paying 1 lakh rupees. I am helping with my friend to my friend by 1 lakh rupees. तो मनी इज कमिंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम मी, तो मेरे को तो कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा. आई एम 100% श्योर. नाउ मिस्टर एक्स इज रिसीविंग, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन आस्क इनकम टैक्स ओवर 1 lakh rupees, बट ही विल से कि इट इज द लोन, अ लोन आई हैव रिसीव्ड और वन डे आई हैव टू रिपे. तो इस पर उसको भी, मिस्टर एक्स को भी टैक्स नहीं लगेगा. नाउ अब अनदर सिनेरियो कि मिस्टर एक्स हैज स्टार्टेड गिविंग 10,000 rupees पर मंथ आफ्टर 6 months. उसने बोला कि भाई 1 लाख रुपया तो मैं एक बार में दे नहीं सकता, बट आई कैन डू वन थिंग कि एवरी मंथ आई विल रिटर्न 10,000 फॉर द नेक्स्ट 10 month. तो 6 month के बाद, जैसे कि मैंने उसको लोन दिया था, आई हैव ट्रांसफर द मनी इन द मंथ ऑफ द जनवरी. Now from this month he has given the confirmation to me कि Manish, I have my promotion was due, and now I got the promotion and my salary has been increased. From this month I will transfer 10,000 rupees for the next 10 months. तो आपका 1 लाख रुपया बराबर हो जाएगा. Now question is to me कि now I am receiving 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Whether I have to pay tax or not. Again, this is the same explanation कि I have transferred to Mr. X as a loan with intention कि I will receive. तो now I am receiving. तो जो पैसा मेरा था, जो पैसा मेरा था, again I am receiving. It means there is no income. यहाँ पर there is no income generation. So जो छोटे छोटे अमाउंट पे मिलते हैं, और whether I have received 1 lakh rupees in a whole at a one shot, या धीरे धीरे 2,000, 5,000 या 10,000, any kind of the amount we are receiving, whatever we have paid, उसके अगेंस्ट में we are receiving, then there is no taxation. तो आपको ये याद रखना है कि when I am paying money as a loan to anyone, तो उसको भी टैक्स नहीं लगेगा. And when he is returning or she is returning in a small amount or in lump sum, there is no taxation. I hope कि I was able to convey to you. Now coming on gift, if amount is the small, suppose that I have visited my sister home and I have seen कि oh बैलेट लाना भूल गया, और देर इज, बिकॉज इन द टुडे सिनेरियो नो वन इज विड्रॉइंग कैश, बिकॉज एवरीवन, चाहे वो पानी पूरी खरीदने जाओ या सब्जी खरीदने जाओ, एवरीवेयर वी आर पेइंग थ्रू द यूपीआई. मेट्रो से भी ट्रेवल करता हूँ, देन आई पे मेट्रो फेयर बाई यूपीआई. देन आई हैव सीन कि यार पैसे तो निकाला ही नहीं, बिकॉज देर इज नो सच एज द सिचुएशन कि कैसे निकालना होता है. आज से 10 साल पहले का अलग सिचुएशन था कि एवरीवन हैड द 2,000, 3,000, 5,000 इन ऑल पॉकेट. ओके, बट राइट नाउ देर इज नो सच एज द सिचुएशन. ओके, देन आई हैव सेड कि भाई बहन एक काम कर,
अपना यूपीआई स्कैनर दे, मैंने वहां पर 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया, 2,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया, ओके। देन इट विल क्वेश्चन टू माई इन सिस्टर अकाउंट whether this money will be taxable or not. Then we have to understand whether it is the small money, it is the 500, 200, 5,000, 10,000. It is the, if it is the small money, then you can ignore. But it is the big amount. Suppose that I want to help. Suppose that my salary is 5 lakh rupees per month. Let's assume my sister is not such as the rich person. Okay, so I am thinking, chalo, I will transfer the 1 lakh rupees for the Rakhi. Let's assume. Then if she is receiving 1 lakh rupees, or suppose that I have transferred the 10 lakh rupees during the Rakhi, let's assume, then whether it is a taxable or not. So when amount is small, then we can ignore, but amount is big, then we have to consider. Suppose that during the Rakhi, I have transferred 10 lakh rupees to my sister. Everyone is aware that there is no taxation up to 7 lakh rupees. 31/5/2023 पर there is no taxation. हाँ, जो ड्यूरिंग ईयर है ये 12 लाख तक देर विल बी नो टैक्सेशन. दैट इज द सेपरेट टॉपिक, उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं. हम बात करते हैं कि let's assume there is no taxation till 7 lakh rupees and I have transferred to my sister 10 lakh rupees. I have transferred to my sister 10 lakh rupees because my sister has told कि भाई मेरे पास एक घर नहीं है, आई वांट टू परचेज होम. तो मैंने क्या किया कि चलो रक्षाबंधन इज द वेरी गुड ओकेजन वेयर आई कैन गिव. तो मैंने एक चेक लिया 10 लाख और मैंने अपने सिस्टर के अकाउंट में दे दिया, और विथ इंटेंशन कि सिस्टर यू हैव नॉट टू रिटर्न टू मी, आपको ये पैसा मेरे को नहीं लौटाना है. तो now my sister received the 10 lakh rupees in her account, whether it will be taxable or not. So definitely it is the taxable. It will सर come सर and इसको गिफ्ट कहेंगे ना? या मैम, तो अभी मैं आ रहा हूँ, जस्ट इट इज द गिफ्ट. तो अभी मैं आ रहा हूँ कि इट इज द इनकम, लेकिन इनकम में देयर इज द टू ट्रांजेक्शन, वेदर इट इज द एग्जम्प्टेड, वेदर इट इज द टैक्सेबल. तो दैट नाउ आई विल make the distinction, make the difference between taxable or exempted. Okay, so my sister has received 10 lakh rupees, then it is the income. First, it is the income. Now, it will be considered as taxable or not. So, इनकम टैक्स में देर इज द वन प्रोविजन अंडर सेक्शन 56 जहां पर लिखा हुआ है कि इफ यू हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम योर रिलेटिव. रिलेटिव का एक डिफिनेशन है जो मैं अभी आपको बताता हूं. इफ यू हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम योर रिलेटिव, वेदर इट इज द 1 रुपीज, वेदर इट इज द 1 CR, देन देर इज नो टैक्सेशन एज पर इनकम टैक्स. इफ यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम रिलेटिव, एंड रिलेटिव का जो डिफिनेशन है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, एंड यू आर रिसीविंग फ्रॉम रिलेटिव 1 रुपीज और या 1 CR, देयर इज नो टैक्सेशन. अब रिलेटिव में कौन आता है ये समझ लीजिए. माई पेरेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो माई पेरेंट के पेरेंट, मतलब कि मेरे माँ पिताजी, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, क्योंकि मदर के साइड से भी पेरेंट और पेरेंट के माँ पिताजी, मतलब मेरे माँ पिताजी, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी. देन उसके बाद मेरे सिबलिंग, मेरे जो भाई बहन है उनसे भी कोई पैसा का एक्सचेंज होता है. जैसे कि राइट नाउ ड्यूरिंग द रक्षाबंधन आई एम गिविंग द 10 लाख रुपीज टू माई सिस्टर, तो सिबलिंग इज कंसिडर एज द नॉट टैक्सेबल. तो वट एवर अमाउंट आई एम गिविंग टू माई सिस्टर, देयर इज नो टैक्सेबल. तो सिबलिंग से भी जो पैसा इन और आउट होता है, मतलब भाई ने बहन को दिया या बहन ने भाई को दिया, ओके, नो टैक्सेशन. फिर मेरा जो स्पाउस है, माई वाइफ है, उसके भाई बहन को भी इफ आई एम सेंडिंग सम मनी और आई एम रिसीविंग सम मनी, देयर इज नो टैक्सेशन. मेरे तो मदर और फादर के भाई बहन हैं, इफ आई एम रिसीविंग और आई एम गिविंग मनी टू माई ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ माई मदर और फादर, देन देयर इज नो टैक्सेशन. बट अगर वो मेरा अपना भाई नहीं है, कजन ब्रदर है, या कोई और है, जैसे कि मेरी मौसी का बेटा है, ओके, मेरे बुआ का बेटा है, मेरे मामा जी का बेटा है, देन इट विल बी द टैक्सेबल. इफ आई एम पेइंग मनी टू माई मामा जी, देन देर इज नो टैक्सेशन. बट व्हेन आई एम पेइंग मनी टू सन ऑफ माई मामा जी, देन इट विल बी द टैक्सेशन. तो सिर्फ कुछ रिलेशन ही दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मेरे माँ पिताजी, उनके माँ पिताजी, मतलब दादा दादी, नाना नानी, उसके बाद मेरे सिबलिंग, मेरे बच्चे, और मेरे माँ पिताजी के सिबलिंग, इतना ही तक एग्जम्प्ट है. और देर इज द टू ओकेजन जहां पर आपको टैक्स नहीं लगता है. जब हम शादी करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग द मैरिज, तो वी आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट. वो गिफ्ट कैश में भी होता है, आइटम में भी होता है. तो ड्यूरिंग द मैरिज वट एवर मनी वी आर रिसीविंग, देर इज नो टैक्सेशन. तो ये चीज आपको हमको याद रखना है. तो
during the Raksha Bandhan, when I am paying to my sister 10 lakh rupees, then it will be not taxable. Income tax will say it is the income, but we will explain that this money is coming from my sibling, and as per section 56, as per income tax, any amount coming from sibling is not taxable. तो वो हमें अब क्या है कि if we want to away from income tax, तो if we have not filed return, then कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन सेंड नोटिस टू मी. बट इफ आई वांट टू सेव फ्रॉम इनकम टैक्स, तो सपोज दैट माय सिस्टर वाज हाउसवाइफ. लेट्स अज्यूम माय सिस्टर वाज हाउसवाइफ एंड शी टोल्ड मी कि भाई मुझे एक घर खरीदना है और जिया जी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, कैन यू हेल्प मी. मैंने बोला ठीक है, मैं 10 लाख से हेल्प करता हूँ. आई हैव ट्रांसफर 10 लाख रुपीज टू माई सिस्टर. और अगर मेरे सिस्टर ने रिटर्न नहीं भरा, देन इट विल बी द टैक्सेबल, मतलब इट विल बी द, इट कैन बी, देयर इज सम पॉसिबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन सेंड नोटिस टू माय सिस्टर. देन व्हाट माय सिस्टर हैज टू डू, शी हैज टू फाइल रिटर्न. अब रिटर्न फाइल करने में देयर इज नो नीड टू पे टैक्सेस. रीजन इज दैट दिस 10 लाख रुपीज कमिंग फ्रॉम हर ब्रदर. अब ब्रदर से जो भी पैसा आता है दैट इज नॉट टैक्सेबल. देन उसको एक एग्जेम्प्टेड का कॉलम होता है, वहां पर जस्ट शी हैज टू डिस्क्लोज कि आई हैव रिसीव फ्रॉम 10 लाख रुपीज फ्रॉम माई ब्रदर एंड देर इज नो टैक्सेशन. तो कल को उसको नोटिस भी नहीं आएगा. अगेन सेकेंड सिनेरियो, there is the one father. Suppose that I am the father and my kids is working in Bangalore, and Bangalore में उसको एक घर पसंद आ गया, and he saying कि पापा this home is around 1 करोड़, 80 लाख रुपया का मैं लोन ले लेता हूँ because my salary is good, और 5-7 लाख रुपया मैंने सेव कर रखा है, तो कैन यू हेल्प मी 10 लाख रुपीज. मैंने बोला ओके आई कैन. उसके अब आप ऐसे समझो कि माई सन सीटीसी अराउंड 20 लाख रुपीज. माई सन सीटीसी इज 20 लाख रुपीज, 20 लाख का उसका सैलरी है, और आई हैव ट्रांसफर 10 लाख रुपीज. तो ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच ही गॉट द मनी. एक तो उसके ऑफिस से 20 आया और मैंने एक 10 दिया, तो टोटल मनी इज अराउंड 30 लाख रुपीज. बट ही विल फाइल रिटर्न ओनली फॉर द 20 लाख रुपीज. रीजन, वो सैलरी इनकम का ही रिटर्न फाइल करेगा. इन दैट सिनेरियो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड नोटिस टू हिम कि भाई we have seen in your account there was the inflow of the 30 lakh rupees, but in the ITR 1 you have filed only income of the 20 lakh rupees. Whether it is the, how you can make the justified, then my son will give the explanation कि my 10 lakh rupees has given from my father, and my father has tax paid because he was earning from business, he was earning from the salary, and that is the tax paid money, and this money is coming from one account to another account, and Mr. Manish is my father. So as per income section 56 there is no taxation. But अगर मेरा बेटे ने आईटीआर रिटर्न फाइल करने में वो एग्जम्प्टेड इनकम में, गिफ्ट इनकम में नहीं दिखाया, तो देयर इज द सम पॉसिबिलिटी कि उसको इनकम टैक्स नोटिस आ जाए. बट ही डिस्क्लोज कि 10 लाख रुपया एज ए गिफ्ट इनकम, एज ए एग्जम्प्टेड, देयर इज नो टैक्सेशन. सैलरी 20 लाख रुपया दैट इज द टैक्सेबल. उस तरीके से रिटर्न फाइल करता है, तो माइट बी पॉसिबल ये नोटिस नहीं आए. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर रिसीविंग एनी गिफ्ट, एनी अमाउंट फ्रॉम एनीवन, इफ इट इज द स्मॉल अमाउंट लाइक 1000, 2000, सपोज दैट मैं कहीं बाहर निकला था और मेरा वैलेट चोरी हो गया, लेट्स अज्यूम, और मुझे नहीं समझ में आया, तो व्हाट आई डिड, मैंने एक अपने फ्रेंड को कॉल किया, भाई तो मेरे को 2000 रुपया ट्रांसफर कर दे, भाई मेरा पॉकेट मारी हो गया. देन ही ट्रांसफर द 2000 रुपीज इन माई ईपीआई और एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग. ओके, या मेरे को किसी मेट्रो स्टेशन पर मिला, मैंने बोला भाई मेरे पास कैश नहीं है, कैन यू गिव मी द 2000 रुपीज एज ए कैश. बोला हाँ भाई ये लेना, मेरे पास 5 है, ले ले दो. He given to me. When I am going to return to him 2000 rupees after 1 days, 2 days, 5 days, then he said कि अरे यार रहने दे, कभी पार्टी कर लेंगे लेकिन पैसे नहीं लूंगा तेरे से. एक दोस्त का बुला लेंगे, उसी में तो 2000 रुपया खर्च कर दिया, बट आई विल नॉट रिसीव मनी फ्रॉम योर साइड. ओके, देन this money is a small, we can ignore, but this money is around 2 lakh rupees, 20 lakh rupees, then we cannot ignore. We have to classify whether it is the loan. If it is the loan, there is no taxation. If it is the gift income, like we have not to return, so definitely it is the gift, and gift is coming from relative, there is no taxation. But gift is coming from my friend, like you can take another example. I have to purchase home. मैंने अपने पापा को बोला कि माई सिटी से द 20 लाख रुपीज, पापा कैन यू ट्रांसफर
10 लाख रुपीज पापा ने 10 कर दिया। देयर इज वन वेरी गुड फ्रेंड, मेरा अपना फ्रेंड है। मैंने बोला भाई तू एक काम कर, 5 लाख रुपया मेरे को देगा? बोला हाँ हाँ, आई विल गिव टू 5 लाख रुपीज। उसने भी मेरे को 5 लाख रुपया दे दिया। ओके, देन इट इज द लोन, तो मुझे इस लोन पर टैक्स नहीं देना है। इवन माई फ्रेंड विल से कि आई विल नॉट, अब there is a question कि my friend is saying कि I will take return from after 6 months 1 year, then it is the loan and there is no taxation on me, but my friend is saying कि भाई एक काम कर, बेंगलोर में मैं भी कभी कभी आता हूँ और आई हैव टू पे रेंटल इन द होटल। एक काम कर, मैं जब जब आऊंगा 5 दिन 10 दिन साल में तो मैं तेरे यहाँ रह लूंगा, ये 5 लाख रुपया मैं तेरे से वापस कभी नहीं लूंगा। 2-3 साल में तेरे यहाँ रहूंगा तो मैं मानूंगा कि मेरा जो होटल का एक्सपेंस है दैट इज इक्विवेलेंट। तो इन दैट सिनेरियो दिस मनी आई हैव नॉट टू रिटर्न, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम एंड दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम माई फ्रेंड नॉट माई रिलेटिव। तो इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, आई हैव टू डिस्क्लोज एट द टैक्स। और मुझे उसके ऊपर जो भी 30% 20% वाट एवर द बास्केट इज कमिंग, मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो व्हेन यू आर रिसीविंग गिफ्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल विदाउट फेस्टिवल एंड अमाउंट इज वेरी स्मॉल लाइक 100 200 2000 5000 10,000, then you can ignore. You are receiving in cash, then again you can ignore. But when amount is big and this is the coming into your bank, then you have to consider matlab when in money is coming, then again it is the income, but when with intention ki this money I have to return one day, then it is the loan, there is no taxation on loan. But there is the intention I have not to return, then I have to check whether it is the relative, whether it is not relative. If money is coming from my relative, then it is the tax not taxable, but it is not coming from क्लोज रिलेटिव लाइक मदर फादर सिबलिंग, दादा दादी नाना नानी मेरा बेटा बेटी, वहां से नहीं आ रहा, देन इट इज द टैक्सेबल। तो दिस इज द होल एंड सम related to gift income. If you have any question, you can ask to me, and after that we can close session. If you have any question, Thank you, Sir, Manish. yeah, sir, Please. sir, one question I have. yeah, ma'am. सर जो वापस कर रहे हैं वो हमने दिया कोविड के टाइम में, और अभी पैसा 5 साल के बाद आ रहा है धीरे धीरे वो भी। तो इस टाइम में मैं नॉन टैक्सेबल में हूँ, उस टाइम में मैं टैक्सेबल में थी। तब मैंने बता दिया था कि मैंने तो ट्रांसफर तो चेक से ही किया था, एनईएफटी ही किया था उसको। या मैम, तो अभी इसको हम कैसे करेंगे सर? या मैम देखिए, इस साल के रिटर्न में ये दिखाना पड़ेगा नहीं नहीं वही लोन मैं कह रहा रिटर्न। हूँ। मैं आपका जस्ट आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन टू यू कि ड्यूरिंग द कोविड सपोज दैट योर इनकम वाज 15 लाख रुपीज, लेट्स अज्यूम योर इनकम वाज द ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब आपने ये पैसा ट्रांसफर किया 15 लाख रुपया था, देयर वाज द टैक्सेशन। ओके मैम, नाउ सब हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि अभी भी आप टैक्सेबिलिटी में हो, पहले इस कंडीशन पर लेके चल जाते हैं फिर आपके कंडीशन पर आ जाते हैं। सपोज दैट 2020 में आपका 15 सैलरी था, तो डेफिनेटली 2025 में ये सैलरी 20 लाख 22 लाख हो गया होगा। हाँ, आपने अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया था, नाउ ही ट्रांसफर वन शॉट में दे दे या धीरे दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से जो ही और सी इज पेइंग बाय वन शॉट कि 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में डायरेक्टली दे दिया। तो ये अमाउंट क्या है कि दिस अमाउंट यू आर रिसीविंग ड्यू टू कि यू हैव ट्रांसफर 5 years बैक। तो जो 5 साल पहले आपने दिया तो वही पैसा मिल रहा है, सो इट विल बी नॉट कंसिडर एज द इनकम, चाहे वो छोटे छोटे अमाउंट में आए और वेदर इट इज द लमसम अमाउंट। ओके मैम, तो इवन आपका सैलरी रहता, इवन यू हैव द इनकम, तब भी वो टैक्सेबल नहीं होता। नाउ यू आर नॉट टैक्सेबल, लाइक आप रिटायर कर गए, वीआरएस ले लिया, या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम था आपने क्लोज कर दिया, लेट्स से यू नाउ यू डोंट हैव द एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, जस्ट यू आर रिसीविंग 10,000 20,000, एक बार में 1 लाख या 5 लाख वाट एवर मनी यू हैव शेयर, यू हैव हेल्प हिम और हर, वहां से वापस आ गया। अगेन इट इज द this loan is coming from whatever the loan you have given, वही पैसा आपके पास आ रहा है, so it will be not taxable for you and there is no need to disclose anywhere. ठीक है सर, बिकॉज वो हमारा जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल कर रहे थे, तो हमारे जो सीए उसका जो बनाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उन्होंने पूछा ये 5,000 रुपए हर महीने आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में, या किसी महीने 3,000 आ रहा है, किसी महीने में 15 आया, तो ये क्या है? तो हमने बोला ये तो हमने 5 साल पहले उसको पैसे दिए थे,
So then it is my chartered accountant's job to knock all these off from income, is it? हाँ, उसको आप बता दो कि इट इज नॉट ए इनकम बिकॉज दिस इज द माई लोन अमाउंट आई हैव गिवन टू माई फ्रेंड एंड ही इज रिटर्निंग टू मी, सो इस पर इनकम नहीं होना चाहिए। इस पर इनकम, आपको इनकम टैक्स, देयर इज नो इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, ठीक है सर, दैट्स ठीक है। वेरी गुड सर, क्लैरिफाई कर हाँ दिया आपने मेरे लिए, हाँ, थैंक यू लेकिन सर, इसमें एक थैंक चीज यू और सो ध्यान मच। रखेंगे आप मैम, एज यू हैव हाँ, नॉट डिस्क्लोज कि यू हैव ट्रांसफर थ्रू द बैंक, तब तो कोई नहीं है। यस लेकिन सर। अगर सपोज दैट आपने कैश में दिया होता, लेट्स एज्यूम कि उस टाइम आपके पास कैश इनकम होता और आपने कैश में दिया था, नाउ यू आर रिसीविंग इन बैंक, तब ये हाँ, क्वेश्चन रेज हो जाता है। रीजन इज दैट कि हाँ, आप कल को इनकम टैक्स में नहीं बोल सकते कि आई हैव हेल्प 1 लाख हम्म, रुपीज टू मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स बाई कैश। हम्म, रीजन 1 लाख रुपया कैश में लोन देना बड़ा गुनाह नंबर। है। ठीक है। हाँ, तो जब हाँ, वो आप दे ही नहीं सकते थे, तो नाउ यू आर रिटर्निंग, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द इनकम, बट यू हैव पेड थ्रू यूपीआई नेट बैंकिंग और थ्रू द बैंकिंग चैनल, तो अब हाँ, आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। या तो एनी अदर पार्टिसिपेट, आई थिंक सवाना जी आपका कोई सवाल हो? nahi, Manish ji, but you covered it very well. Thank you so much. Thank you. Yeah. So I think we can wrap it for today then. Yeah, so today we can close, and if you, anyone other person who will see the recorded session and they will have the question, so definitely we will I will give the explanation on the WhatsApp, or whenever we will be the live for the next session, so we will give the answer. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you, Jayalakshmi ma'am. Thank you for listening, and I hope ki definitely you have asked question. So there is no asking question ki how was the feedback. I hope ki it was the nice. Excellent sir, excellent, I'm so grateful sir for this session. Thank you, Thank ma'am. you ma'am, Shabana ma'am, thank you for this excellent Thank session. you. Thank you. Oh. Thank you, Manish ji. See you again.